Okay, so before we start on permutation combination, you should be aware of factorial notation. Okay. In factorial notation, you give it as either n factorial or you write it down as factorial n. So this means product of first n natural numbers. Okay. That is, if I am saying 3 factorial is 1 into 2 into 3, that is 6. 4 factorial, this is 1 into 2 into 3 into 4, that is 24. 5 factorial, that is 1 into 2 into 3 into 4, that is 4 factorial into 5, right? Can we say it like this? So 24 5s, Yes. this is 120. 6 factorial है ना, 1 2 3 4 5 6. This product is 120, so this is 720 है ना. ये factorials आपको by heart होनी चाहिए. जो आपका n factorial है, that is 1 into 2 into 3 up to product of first n natural numbers, not n numbers and real numbers, no, first n natural numbers. This you can also write it down as product of first n minus 1 natural numbers into n. So this is same as n minus 1 factorial into n. Okay? These are different ways of writing it. I can also write it down as n into n minus 1 into n minus 2 factorial. यहाँ तक clear है factorial meaning? Yes, sir. Okay. If I am saying what is 7 factorial upon 5 factorial, right? So you don't have to write it down full. आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है 1 into 2 into 3 into 4 like this. So you write this as 5 factorial into 6 into 7 upon 5 factorial. So factorials are getting cancelled out. What you're getting is 6 into 7, which is 42. Sir, I have a doubt. Anji? Sir, how is 0 factorial 1? Okay, ये थोड़ा सा later stage पे लेंगे है ना, अभी confuse हो जाएंगे सब. So this you can take a note that 0 factorial is 1, 1 factorial is 1 and 0 factorial is also 1. ठीक है. So later stage में जब हम combination लेंगे, then you ask me this question again, maybe after 3 classes. ठीक है, clear है यहाँ तक? So if I am asking you other way, I am asking you write 10 into 11 into 12 in factorial notation. If I'm asking you to write in factorial notation, so you will say, sir, this thing is nothing but 1 into 2 into 3 up to 9, right? Into 10 into 11 into 12 upon 1 into 2 into 3 up to 9. So this becomes nothing but 12 factorial upon 9 factorial. Done. So factorial itself is a separate chapter is there. Lot of things are there in factorial chapter, but that factorial comes in your CAT, GMAT if you're giving MBA exams. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतनी knowledge is good enough for you to proceed with the chapter permutation and combination. ठीक है, permutation and combination is a chapter in which actual intelligence is checked. ठीक है, this chapter, if you are good in maths, then you will solve the questions easily. मतलब questions जो वो logically ज़्यादा solve होंगे rather than using any formulas. ठीक है, so you will have to always think on something new in each question. ठीक है, छोटा सा theory part है इसमें. You have got counting principles are there. So this counting principle is number of ways if you are counting. So one is addition, and other is multiplication.
Addition is in case if the things are, ठीक है, थोड़ा सा theory part है, I'll explain it. If things are mutually exclusive, if things are not mutually exclusive, and if things are mutually exclusive, ठीक है, इसका meaning क्या, that I will tell. Things are not mutually exclusive means both the things cannot occur separately, है ना, not mutually exclusive, ठीक है, they cannot occur separately. For examples, if I am asking you in how many ways you can wear, you have selected a trouser already, in how many ways you can wear the upper parts. If you are asked to select from 5 different shirts, ठीक है, अगर मैंने सिर्फ 5 shirts की आपको ऑप्शन दी है तो you will say, sir, I can wear those 5 shirts in 5 ways, ठीक है, there is no other way of doing it. Or if I am saying between 5 shirts and let's say 3 t-shirts, now you cannot wear shirts and t-shirts together, right? So they are mutually exclusive, they are not म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन दैट, है ना, ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि अगर आप शर्ट पहन रहे हैं तो आप टी शर्ट नहीं पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं तो शर्ट नहीं पहन सकते हैं. So this wearing of shirt and t-shirts are not mutually exclusive, they are not independent, and thus number of ways in which you can wear the top part is 5 plus 3 or 8 ways. If same thing I'm asking you, in how many ways you can wear a dress, if you have option of selecting it from 5 different shirts and 3 trousers and 2 hat, right? So if you have taken a red shirt, ठीक है, hat को हम हटा देते हैं अभी. If you have taken a red shirt, so with red shirt you will have 3 options of different trousers are there, ठीक है. So you will say, so with red shirt I can wear the dress in 3 different ways because 3 trousers are there. With blue shirt again I can wear the dress in 3 different ways. With black shirt again I can wear the dress in 3 different ways, ठीक है. Same way with white shirt I have got 3 different trousers are there, so it makes 3 different ways. And with yellow shirt again 3 different trousers. So total combinations I am having is 3 into 5 or 15 ways. In 15 different ways I can wear my dress from 5 shirts and 3 trousers. These were mutually exclusive. अगर मैं शर्ट पहन रहा हूं तो ट्राउजर्स के ऊपर कोई बैरियर नहीं है, so I am multiplying in this case and that gives me 15 ways, ठीक है. So counting principle involves addition and multiplication. Addition is if things are not mutually exclusive, multiplication if they are mutually exclusive, ठीक है. So throughout this chapter we'll be dealing with 99% is in the case of multiplication. Let's see here. Okay, if I'm asking you in how many different, question is how many different words can be made from letters CAT, ठीक है. CAT से डिफरेंट वर्ड्स कितने बन सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर पहले हम C से स्टार्ट कर लेते हैं, CAT, देन इज CTA, देन इज A से स्टार्ट करेंगे तो ATC, ACT, देन TCA and TAC. These are 6 different words which can be made. Agreed on this? Yes, sir. अब ये जो 6 different ways है, इसको अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो यू आर सेइंग कि सर आप स्टार्ट जो है ना या तो C से कर सकते हैं या A से कर सकते हैं या T से कर सकते हैं, तीनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट लेटर कैन हैव 3 different options. Once you have selected this option, जब आपने एक ऑप्शन सिलेक्ट कर ली है,
Now this letter cannot come into the second place. For each option there are two options which are occurring. ठीक है, हर ऑप्शन के साथ दो दो ऑप्शंस अकर आ रही हैं, isn't it? So T के साथ this is A and C. So with once you have taken first letter in three ways, for next letter one of the letter is missing, so next letter can come in two ways and the next letter can come in one ways. So total number of words which can be made from cat are 3 factorial. Agreed? Yes. Okay. चलो क्वेश्चन you have got, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट है बट ये क्वेश्चंस लेकर ही क्लियर होगा. You have got digits from 1 2 3 4 5 6. ठीक है, इन डिजिट से you have to make 6 digit number and repetition is not allowed. आप डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं. नंबर 1, how many 6 digit numbers can be made? And you answer it please. 6 factorial. 6 factorial है ना, आपके पास 1 2 3 4 5 6. So you will say first उसमें 6 digits can come. Then next के लिए हमारे पास सिर्फ 5 बची हैं, 1 digit already use हो गई हैं. 4 3 2 1. So total answer is 6 factorial. ठीक है, question is how many are even? इनमें even कितनी होंगी? तो अगेन 1 2 3 4 5 6. आपके पास लिमिटेशन किससे रिलेटेड है? यूनिट डिजिट से रिलेटेड लिमिटेशन है ना. इवन के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट्स आ सकती हैं. दोज आर योर नंबर 2 4 and 6. So you will say 3 digits can come at even place. अब one of the digit is used here. So how many can come here? 5. 5 4 3 2 1. So your answer is 5 factorial into 3. This is 120 3 is a 360. चेक करें, यहाँ पर आपका लेवल 1 जो है वो फिनिश हो गया एंड वी लाइक टू मूव ऑन लेवल 2. एग्रीड? क्वेश्चन, ठीक है, चलो पहले लेवल 1 पे एक दो और ले रहे हैं. हाउ मेनी विल बी डिविजिबल बाय 5? सर एंड में 5 आ जाएगा. ओके, सो आंसर चैट बॉक्स. How many are divisible by 5? Very good, Aryan. हाँ जी, वेरी गुड उन्नति. सो आंसर विल बी, लास्ट में हमारे पास 5 आ गया है. 5 को यहाँ ऊपर मत लिख देना, ऊपर में ऑप्शंस है. कितनी ऑप्शंस हैं? ऑप्शन सिर्फ एक ही है, दैट इज डिजिट 5 कैन कम हियर इन यूनिट प्लेस. Rest is 5 4 3 2 1. So my answer is 5 factorial into 1 or 120 is my answer. ठीक है, I received 3 answers as 5 into 5 factorial. So be careful next time. चलो chat box. How many are multiple of 3? इन नंबर्स में से कितने 3 के मल्टीपल होंगे बेटा? ओके, कुछ 10th क्लास स्टूडेंट है ना, दे हैव एंटर्ड द क्लास. बेटा ये 11th की क्लास है, ठीक है. सो आई एम अलाउइंग इट टुडे. ओके, नेक्स्ट टाइम ओनली दोज हु हैव रिक्वेस्टेड टू जॉइन 11th ग्रुप विल बी अलाउड. हाँ जी, आंसर. वेरी गुड उन्नति.
Aryan Jangir wrong. So Unati has done correctly. How many are multiple of 3? Sachit, Yes sir. आपका आंसर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 कैसे आया बेटा? सर 3 और 6 होंगे. 3 और 6 होगा यूनिट डिजिट. सर Sure. Divisibility rule of 3 is what? सर सम डिविजिबल होना चाहिए. Sum should be divisible by 3. है ना? 1 से लेकर 6 तक. Sum is how much? 21, which is divisible by 3. So Unati is saying, sir, any number you make, that number will be divisible by 3. And hence our answer is 720. ठीक है? हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes. Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, ठीक है, थोड़ा सा लेवल रेस करते हैं. E. In how many numbers 1 and 3 will be together? 1 और 3 को आपको क्या करना है? टुगेदर रखना है, साथ में रखना है. ठीक है, सो 1 और 3 को अगर साथ में रखना है तो नंबर्स ले लो आप. सो 1 and 3 मैंने लिया. ठीक है, फिर इनको मैंने क्या किया? इनको मैंने रस्सी से बांध दिया आपस में. और उसके बाद मेरे पास नंबर्स कौन से बचे? 2, 4, 5, 6. है ना? अरेंज करने के लिए अब मेरे पास कितने लॉट्स हैं? आई डोंट हैव 6 पीपल नाउ. आई हैव गॉट 1 टाइड अप ब्लॉक and 2, 4, 5, 6. You are getting my this point, है ना? I want 1 and 3 to be together. अब मुझे इन 5 को अरेंज करना है. इन 5 को मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ बेटा? हाँ जी, इन 5 को मैं कितने वे में अरेंज करूंगा? ठीक है, फर्स्ट में मेरे पास 5 ऑप्शन है, देन 4, 3, 2, 1. So I can arrange this 5 in 5 factorial ways. Yes. लेट मी नो, है ना? बिल्कुल नया टॉपिक है बेटा, थोड़ा ऊपर से जा रहा है तो मुझे बताओ, है ना? देन ओनली आई कैन एक्सप्लेन इट फर्दर. Please explain once more. Okay. So I am interested in how many numbers 1 and 3 will be together. In the end, it is all about arrangement की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, if I am asked to arrange 5 person in a row, in how many ways I can arrange 5 persons in a row? I'll say 5 persons are A, B, C, D, E. So I can arrange them as first, starting में first position पे 5 people, 5 options, है ना? 4, 3, 2, 1. Instead of 5 people, I want to arrange 1 box and 3 people. In how many ways I can arrange them? 4 factorial. 4 factorial. Okay. Agreed on this? Yes, sir. So here I have got 1 box and 4 numbers. How many ways I can arrange them? 5 factorial. 5 factorial ways. But 5 factorial is not the answer. Tell me हम कहाँ गलती कर रहे हैं? -2 factorial. Why? सर क्योंकि 1 और 3 इंडिपेंडेंट नंबर्स हैं. तो 2 factorial माइनस क्यों करेंगे? Question says 1 and 3 will be together. It never says 1 will be before 3. 1 3 से पहले आएगा, ऐसी तो कुछ बात ही नहीं हुई हमारी. 1 and 3 should be together. तो ये जो 5 factorial है, इनमें 1 is coming before 3. There will be 5 factorial more numbers in which 3 will come before 1. Exactly same cases जहां पर हम 3 को 1 से पहले रख देंगे. Yes, sir. So answer will be 2 into 5 factorial. चेक करें. ओके, इसी को फिर वापस किसी और वे में अगर हम देखें, ठीक है, सो आई एम सेइंग पहले हमने इन 5 को अरेंज किया. आई कैन अरेंज देम इन 5 फैक्टोरियल वेज. देन इन ईच ऑफ दोस केसेस आई कैन अरेंज द पर्सन्स इनसाइड द बॉक्स in 2 factorial ways. So my answer is 5 factorial into 2 factorial. ठीक है,
लेट्स टेक वन मोर केस हियर, ठीक है, जिसमें हम एग्जांपल बनाकर करते हैं. सो दिस इज ABCDEF. आई एम इंटरेस्टेड इन, यू हैव गॉट 1 2 3 4, ठीक है. चलो नहीं 5 लेंगे ज्यादा हो जाएगा. इन विच 1 2 3 शुड बी टुगेदर. 1 2 3 जो है वो साथ में होनी चाहिए, ठीक है. तो 1 2 3 अगर साथ में होनी चाहिए तो क्या करोगे, 1 2 3 को क्या करोगे आप, यू विल टाई देम विद अ रोप, है ना, रस्सी से बांधोगे ना उनको. आपने Yes, उनको sir. रस्सी से बांधा कि भाई परमात्मा ने आपके ऊपर कंडीशन लगाई है, आपको साथ में खड़ा होना है ना. और ये 4 ये वेला है. अब आपके पास 2 आइटम्स हैं, इनको कितने वे में अरेंज कर सकते हैं हम, 2 2 factorial. factorial. है ना. दैट इज सेकेंड इज दिस, राइट. नाउ 1 2 3 शुड बी टुगेदर, बट इट नेवर सेज कि कौन पहले आएगा. तो दैट मीन्स ईच ऑफ दिस कैन फर्दर. नाउ हर एक केस में 2 फैक्टोरियल, हाँ जी, 2 फैक्टोरियल के हर केस में नाउ यू आर गेटिंग 3 फैक्टोरियल मोर ऑप्शंस, है ना. बाय अरेंजिंग 1 2 3, 1 2 3 को अरेंज करके आपके पास और ऑप्शंस मिल रही हैं. तो फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल किया तो हमारे पास 2 फैक्टोरियल आया. उसके बाद 1 2 3, सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शंस है 1 2 3 4, 1 3 2 4, 2 1 3 4, 2 3 1 4, 3 1 2 4, 3 2 1 4. So this is 6 ways, and further 6 ways will be from here. So my answer is, overall my answer is, in 2 factorials I can arrange a box and a 4. Then each box I will further arrange in 3 factorial ways. This is my answer. And you understood? Yes, sir. कुछ नहीं, पहली 2 क्लासेस ऐसे हैवी सी लगती हैं, but then you will start enjoying it. It's really good. Sixth one. Okay, EFG. You have got again 6 digits are there. You have to arrange them such that 4 and 5 are never together. ये साथ में होने ही नहीं चाहिए भाई. How many numbers can be formed such that 4 and 5 are not together? सर हाँ जी. सर मुझे एक डाउट था पिछले वाले पार्ट में कि उसमें हमने 2 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिए. ओके, आप 2 3 फैक्टोरियल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कहेंगे कि सर यहाँ पर नंबर्स जो अरेंज हो रहे हैं वो 3 फैक्टोरियल बेस में, यहाँ पर जो नंबर्स अरेंज हो रहे हैं वो 3 फैक्टोरियल बेस में, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे सो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे ये आ जाएंगे. ओके सर. ओके, सो बेसिकली इट्स लाइक ब्रांचिंग आउट ना. आपने पहले थ्रो किया हेड या टेल, उसके बाद आपने डाइस थ्रो किया, तो डाइस में यू कैन गेट 1 2 3 4 5 6. So you can get 1 2 3 4 5 6, right? So total is 6 plus 6, that is 12. Or you can say first case से related हमारे पास total options थी 2, next case में हमारे पास total options थी 6, and overall combination में options हो गई हैं 2 into 6, that is 12. जो head and tail है that is independent of number coming on dice, and that's multiplication principle you'll use, multiply them. ओके सर.
हाँ जी, 4 and 5 not together. Okay, lot of different answers are coming. Let's see here. So प्रांतिक बेटा मुझे फटाफट बताओ कि 6 digits हैं तो कितने नंबर बन सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। इसमें से कौन से नंबर जो है मुझे पसंद नहीं है? सर जिनमें 4 and 5 टुगेदर है। तो वो हम माइनस करते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 4 और 5 को साथ में रखा तो 1 2 3 and 4 and 5 in a box and 6, तो कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 6 फैक्टोरियल में से आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 factorial is 1 2 3 4 5, that's 5 factorial, and this box itself can be arranged in two ways, so into 2. 6 factorial is 6 into 5 factorial, right? And this is 2 into 5 factorial. Common is 5 factorial, so your answer is 4 into 5 factorial. That's your answer. ठीक है, सॉल्व करेंगे. दिस इज 480. सर हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम 1 2 3 और 6 को एक ग्रुप में ले लें और फिर 4 और 5 को अलग से ले लें तो ओके, ले लिया. तो सर उसमें फिर बनेगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. बट ये हमारा सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है. 4 और 5 साथ में नहीं होने चाहिए. ये मैंने कब कहा कि 1 2 3 6 साथ में होने चाहिए. तो यहाँ पर ये जो केस पहला केस बना यही मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है. 4 और 5 साथ में आ गए हैं. ठीक है, और इसमें वो केसेस आप मिस कर रहे हैं जहां पर 1 2 4 3 6 ऐसा कोई केस अगर बनेगा ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल था, बट आपने तो मना कर दिया इसको. हाँ जी सचित. कैन यू रिपीट सर? हाँ जी बिल्कुल. आई एम सेइंग दैट 4 and 5 आर नेवर टुगेदर, है ना. दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट. आपने 1 2 3 6 को साथ में रखा और 4 और 5 अलग अलग लिए हैं. बट ये जो पहला केस बना, दिस फर्स्ट केस इटसेल्फ, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि 4 and 5 आर कमिंग टुगेदर. ओके सर. राइट. प्लस यू आर मिसिंग सम केसेस, वो केसेस जहां पर 4 and 5 आर कमिंग इन बिटवीन 2 3 and 6. नाउ दिस इज दिस एक्सेप्टेबल टू मी, है ना. मेरे लिए एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? 4 और 5 साथ में नहीं होनी चाहिए. दैट इज व्हाट इज एक्सेप्टेंस मींस टू मी. दिस इज एक्सेप्टेबल, बट आप जो कैलकुलेट कर रहे हो उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है. राइट राइट. यस सर समझ. ओके. ये ना बहुत बेसिक्स है क्लास की, है ना. कहीं कुछ भी डाउट होगा प्लीज आस्क. अभी इसके बाद फिर हम 0 लेकर और करेंगे, देन वहां पर और केसेस बनेंगे. सो हाउ मेनी नंबर्स आर मोर देन 2000 बट लेस देन 5000? हाँ जी फटाफट. अनीश बताओ लिमिटेशन कहां पर आ रही है? सर आई डोंट नो. ओके. 2000 से ज्यादा होने चाहिए. बट अच्छा 2000 और 5000 तो ये हमारी गलती हो गई ना, ये पॉसिबल ही नहीं है. सो 20,000 से, सॉरी 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए और 5 लाख से कम होना चाहिए. ठीक है. सो लिमिटेशन इज इन योर लेफ्ट मोस्ट डिजिट. तो यहां पर आपके पास एक्सेप्टेबल कौन कौन सी डिजिट्स हैं? एनीवन? 2 2 3 4 3 4, ओनली दीज 3 आर एक्सेप्टेबल. ठीक है, तो आपने यहाँ पर इन तीनों में से एक डिजिट ली है. नाउ लेफ्ट आउट इज 5 डिजिट, सो इनटू 5 इनटू 4 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 1. दिस इज योर आंसर. हाँ जी एग्रीड. यस सर. ओके, आई थिंक थोड़ा सा फास्ट पेस हो रहा है ना. लेट्स स्लो इट डाउन. GHI. Let's take one more question. I have got
1, 2, 3, 4, 5. How many numbers? 5-digit number are there such that 3 and 5 are always separated by a single digit. 3 और 5 के बीच में हमेशा एक डिजिट होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए. So what I'm going to do is I'm not telling my way. I'm more interested to listen your way and then to discuss why it is correct or not correct. तो Think on it. शायद से आ गया मेरे को. हाँ जी बताओ कैसे करेंगे आर्यन. सर एक बार पहले आंसर भेजूं. नहीं मुझे आंसर खुद ही नहीं पता. आप बताओ कैसे अप्रोच हो. सर मैंने ऐसे लिया कि सर जैसे एक बॉक्स ले लिया उसमें 4-5 लिख लिया. 3 and 5. हाँ सर 3 and 5. हाँ सर फिर बाहर 2 और डैश डाल दिए क्योंकि कोई भी जो बाकी डिजिट्स बचे 3 में से कोई भी आ सकता है. सर तो टोटल बॉक्स और उसकी 3 कॉम्बिनेशन हो गई तो 3 फैक्टोरियल. Okay, so first he is doing is he is filling up this place. He says sir this place I can fill up in 3 ways, not Yes. 3 factorial ways, 3 ways. हाँ जी. सर नहीं मैं सर बॉक्स और बाकी बाहर के 2 डिजिट्स की बात कर रहा था. अच्छा बॉक्स और बाहर की 2 डिजिट once these are formed, so this can be arranged in 3 factorial ways. Okay. सर फिर जो बीच की डिजिट है 3 और 5 के वो भी 3 वेज में हो सकती है. Okay, so this box itself could have been made in 3 different ways. So into 3. और सर फिर 3 और 5 भी इंटरचेंजेबल है तो into 2. This 3 could have come here, 5 this side, so into 2. Impressive, very good. ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स डिकोड दिस अगेन. पहले हम 3 फैक्टोरियल नहीं लेते हैं, पहले हम बॉक्स को अरेंज करते हैं. ठीक है, अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो पॉइंट x है ना, दिस x could have come in 3 ways, either 1 or 2 or 6, sorry, or 4. ठीक है, so this box itself could have been made in 3 different ways. So these are 3 ways in which the box could have been made, right? And then this box and y and z can be arranged in 3 factorial ways. Inside the box, यहाँ पर पहले ये जो cases है उनमें 3 is coming before 5. If you will shift, then 5 will come before 3. That also is acceptable to me. So into 2. This is my answer. Very good, impressive. ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचा है. Before taking that concept, I'll discuss out something. Okay. If I'm forming a letter, let's say A, B, C, D, E. ठीक है, so इसमें there will be, अगर मैंने A और B की पोजीशन बेटा फिक्स कर दी है, ठीक है, then CDE can be arranged in 6 factorial ways. That means there will be 6 factorial words which will have A, B, C, D, E. Sorry, 3 factorial words which have letter A, B, C, D, E with first 2 letters as A and B. Agreed on this? Yes, sir. तो यहाँ पर बेटा टोटल कितने आपके वर्ड्स बनेंगे? टोटल वर्ड्स विल बी 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120. On 120 में there will be 6 factorial words where A and B are fixed and this C, D, E are permuted in the
सेकेंड लॉ, है ना. सी डी ई आपस में परम्यूट हो रहे हैं, दैट इज दिस इज सी ई डी, दिस इज ई डी सी, ई सी डी, डी ई सी एंड डी सी ई. ठीक है. हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर मैं ए और बी को फिक्स करता हूं तो सी डी ई जो है वो 6 वेज में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन. Question is, one, two, three, four, five, six. How many 5 तक ले लेते हैं. How many 5-digit number such that 1 comes before 2 and 2 comes before 3. Example, acceptable cases 1, 5, 4, 2, 3, है ना. This is acceptable to me. Or 5, 1, 2, 4, 3, this is acceptable. 1 before 2, 2 before 3. Need not to be next to each other, but just the ascending order which is required. Agreed on this? Now, pay attention on this. अगर आप मुझे कोई भी वर्ड बनाएंगे, है ना, कोई भी एक नंबर बनाएंगे, लेट्स से द नंबर इज 1, 5, 4, 2, 3. ठीक है. कीपिंग दिस 5 and 4 फिक्स्ड. अगर मैंने 5 और 4 को फिक्स किया है, इन हाउ मेनी वेज आई कैन परम्यूट दिस नंबर्स? हाँ जी, फटाफट. क्या हो गया भाई क्लास? वो ऊपर की कंडीशन अभी 4 फैक्टोरियल. हाँ, सो मैं अगर इनको सिंपल परम्यूट कर रहा हूँ, 5 और 4 को मैंने फिक्स किया है. ठीक है. सो दिस इज 5, 4, 1, 2. इनमें से मुझे कितने एक्सेप्टेबल हैं? हाउ मेनी आर फुलफिलिंग माय कंडीशन? Out of this 6, how many are fulfilling my condition? Only one. Only one number is fulfilling my condition out of 6. Agreed on this? अगर आप 5 and 4 की पोजीशन लेते हुए, है ना, उनको फिक्स करके if you will permute 1, 2, 3, then out of 6 possibilities only one will be fulfilled. ठीक है. So basically I can divide this 720 numbers into blocks of 6, 6, 6, 6, 6, and out of all those 6, 6 blocks only one will be fulfilling my condition. ठीक है. अगर आपने कुछ और लिया है, if you have taken 5 here, then dash and 4 and dash. So ये जो dash है, इन dash को हम कितने वे में fulfill कर सकते हैं? 3 factorial ways में, 6 ways में. But only one will be acceptable to me. सिर्फ एक और एक ही नंबर मुझे एक्सेप्टेबल है. ठीक है. सो आउट ऑफ एवरी 6 नंबर्स ओनली वन नंबर इज एक्सेप्टेबल टू मी, इन विच 1, 2, 3 विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. सो यू विल से टोटल नंबर्स आर 5 फैक्टोरियल्स. ठीक है. इन दिस 5 फैक्टोरियल, ठीक है, आउट ऑफ एवरी 3 फैक्टोरियल नंबर्स ओनली वन इज एक्सेप्टेबल टू मी, and this becomes my answer. ठीक है. Even if you have got 25% of what I am saying, it's perfectly okay. I'll take 1 or 2 more questions. ठीक है. I'll post the video. You can later on copy it from there. Question same pattern पे. हाँ जी. तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी जैसे ही हो गया ना. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. आगे करेंगे तो प्रोबेबिलिटी जो है वो टोटल पीएनसी लगेगा आपको कि सर ये तो पूरा पीएनसी है, फॉर्मूला कुछ है ही नहीं. ठीक है.
एंड डोंट वरी ऑन दिस, है ना. ये जो पीएनसी है, क्लास 8th में जो मेरा फर्स्ट बैच था, आई प्रिपेयर देम फॉर प्री आरएमओ. सचित, आपने की थी प्री आरएमओ की? नहीं सर, मेरे भाई ने की थी. अच्छा. एंड उन्नति, आपने? यस सर. हाँ, तो प्री आरएमओ में हमने पूरा पीएनसी किया था, है ना. आई टॉट आपका जो है मानस, यश, है ना, दीज आर टॉपर्स इन फिटजी एट प्रेजेंट. सो विद देम आई हैव डन 8th क्लास में हमने पीएनसी पूरा किया था, इंक्लूडिंग जैनी दीदी. एंड आईआईटी लेवल का पीएनसी पूरा किया था हमने. तो पीएनसी क्योंकि टोटली एक लॉजिकल चैप्टर है ये, है ना, कोई फॉर्मूलाज नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा. 7th क्लास स्टूडेंट हैज डन 10th क्लास प्रोबेबिलिटी, नथिंग इन दैट. 11th क्लास प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा और मजा आएगा. ओके. So हम कहाँ पर थे? ओके. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल कितने नंबर्स बनेंगे बेटा? 6 फैक्टोरियल. आई एम इंटरेस्टेड इन हाउ मेनी ऑफ दोस नंबर्स 2 is coming before 1 and after 3. 2 is coming before 1 and after 3. So you will say that 2, 1 and 3 की जो arrangement है, this can be done in 3 factorial ways. 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1, 1 2 3 and 1 3 2. Out of which how many are acceptable to me? 1. Only one condition, 2 before 1 and after 3. So this is acceptable to me. ठीक है. Now in this 6 factorial numbers, ठीक है, order of how many numbers will be there in which the order will be 2, 1, 3. So you say, sir, out of this 6 factorial, 1/6 of the number will have 2 before 1, 1 before 3. 1/6 of the number will have 2 before 3, 3 before 1. 1/6 of the number will have 3 before 1, before 2. अभी समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है. So how many will have 3 before 1 before, sorry, how many will have 2 before 1 and 2 after 3? So answer will be 1/6 1/6. of total number. Okay. If you have got this concept, now this is going to help you a lot. ठीक है. Question. ठीक है, देखते हैं कितनों का ठीक हो रहा है आंसर. 1 2 3 4 5 6. How many numbers will have? It's a good question. How many numbers will have 2 before 5 and 6? Okay, Prantik, very good, impressive, correct. Others, please, है ना, you can give me in factorial. I have absolutely no issues with that. Sachit, do it again. Unnati, correct. Saransh, correct. Very good. तो मेरा ठीक है. आर्यन, वेरी गुड, करेक्ट. सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, सो दिस टोटल नंबर्स आर 6 फैक्टोरियल. ठीक है, इसमें जो है एवरीथिंग इज गिवन इक्वल वेटेज, सबको इक्वल वेटेज है. इन हाउ मेनी नंबर्स 2 इज कमिंग बिफोर 3. तो आप कहोगे सर 3 को हमने ऐसे कोई प्रिविलेज थोड़ा ना दिया है.
तो आधी बार 2 पहले आएगा और आधी बार 3 पहले आएगा, है ना। सो सेम गोज अगर आप 3 नंबर्स में भी डिवाइड करेंगे, सो ईच वन विल गेट डिवाइडेड इक्वली, ठीक है। अब क्वेश्चन किसके बीच में है, 2, 5, 6 के बीच में, किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिला है, ठीक है। सो 2 बिफोर 5 एंड 6 और 5 बिफोर 2 and 6 and 6 before 2 and 5, इनमें से सबसे ज्यादा बार कौन अकर करेगा, ये या ये? यू विल से कि तीनों इक्वली करेंगे ना, क्योंकि कोई यहाँ पर नवाबजादा थोड़ा ना कि हम अलग से प्रिविलेज दे रहे हैं किसी को। सो ऑल 3 विल अकर इक्वली। सो 1/3 ऑफ द नंबर विल हैव 2 बिफोर 5 and 6, 1/3 विल हैव 5 बिफोर 2 and 6, 1/3 विल हैव 6 बिफोर 2 and 5। और मन करे तो आप 2, 5, 6 के केस बनाओ। 2, 5, 6 can be arranged in 3 factorial ways, out of which acceptable are 2, 5 and 6 and 2, 6 and 5. So you'll say 2 by 3 factorials are acceptable ways, ठीक है। और permutation में you'll say 6 factorial by 3 factorial into 2. Agreed? चलो आपका जो है बेसिक्स एक कंप्लीट हो गया लेवल। अब इसमें हम जीरो को लेकर और केसेस बनाते हैं, सो माइंड विल ओपन अप मोर इन दिस। बट यहाँ पर अगर एक केस में एक और ले लूं, हमने अभी तक किया रिपीटिशन नॉट अलाउड। इफ आई से रिपीटिशन इज अलाउड, तो आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट इसमें कितने नंबर्स आ सकते हैं? अरे इसी केस में जनरल में इसी में 6 जो है हमारे पास डिजिट्स हैं, तो 6 ऑप्शंस आर देयर इन द नेक्स्ट। तो सब में 6 आ सकते हैं, 6 ऑप्शंस है ना, 6 6 6 6। सो योर आंसर इज 6 raised to power 6. How many different numbers can be made 6 digit? Answer is 6 raised to power 6 with repetition allowed. Okay. ऐसा करते हैं, जीरो वाला केस जो है हम कर लेंगे आज। थोड़ा सा और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सीखते हैं। If I am asking COAL, how many different words can be made, 4-letter words, by rearranging them? Answer will be 4 4 factorial. factorial. 4 factorial. But if I am saying COOL, how many different letter words can be made? 4 factorial by 2 factorial. ठीक है, 4 factorial by 2 factorial। ठीक है, ये कहाँ से आया 2 factorial? तो यू विल से कि सर यहाँ पर जो O और A है, इनको अगर हम आपस में परम्यूट करेंगे तो हमें अलग अलग वर्ड्स मिल रहे हैं, बट O और O को आपस में परम्यूट करोगे तो COOL या COOL है ना, दैट्स गिविंग मी सेम वर्ड। तो यहाँ पर O और A जो है वो मुझे बेसिकली हर बार रीअरेंज कर रहे थे वो आपस में, जो यहाँ पर रीअरेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो 2 factorial numbers will get reduced down exactly in same way। अगर मैंने बोला how many 4-letter words can be made such that O comes before A, तो आप क्या कहेंगे सर 4 factorial divided by O should come before A। तो इनका आपस में जो अरेंजमेंट था वो AO भी हो सकता था, तो आउट ऑफ 2 only 1 is acceptable, so 1 by 2 factorial। ठीक है, सो एग्जैक्टली सेम लॉजिक में COOL number of words which can be made is 4 factorial by 2 factorial। अगर मैंने यहाँ पर आपको पूछा बैलून, ठीक है, सो ये 1 2 3 4 5 6 7, माय आंसर इज टोटल 7 factorial words could have been made provided ये जो L है और ये जो O है ये थोड़ा से डिफरेंट दिखते तो, बट क्योंकि ये सेम दिखते हैं, सो my answer will be 7 factorial by 2 factorial, because these two permutation will not give me any answer and these two permutation will not give me any answer। हाँ जी, क्लियर है ये? Yes, sir. Okay, what is this English word I am writing down?
Anyone? It's a mathematical word. Chalo, let's see who will answer it first. Divisibility. क्या हुआ भाई, एनर्जी कम लग रही है? ठीक है. How many words can be made? So you have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So answer is 12 factorial by how much? 5 factorial. 5 factorial. ठीक है. So that's how many words from divisibility can be made, considering i's are repeating themselves. Okay, how many words can be made? A, B. How many words can be made? Speak out. हाँ जी. 7 factorial by 4 factorial into 3 factorial. Everyone clear on this? ठीक है. अगर नंबर ऑफ थिंग्स रिपीट हो रही हैं तो उसमें आप डिवाइड कर देंगे. ठीक है. देखने में भी ये बहुत सिंपल सा इजी सा है. इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है. ठीक है. स्पेशली इन IIT है ना. सिर्फ सिंपल इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे एंड विल सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस. ठीक है. टुमारो डे आफ्टर टुमारो क्लास है ना. प्लीज रिमाइंड मी. आई विल टेक क्वेश्चंस ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. ठीक है. वो वाले क्वेश्चंस हमें जरूर लेने. So today I am taking these questions. हाँ जी, please confirm I am audible. Yes, sir. Okay, are you ready for this? Let's see here. So I have got this pathways here. This is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. In how many ways I can go from point A to B covering shortest distance? Shortest distance means I'll either go north or east, है ना. I will not come back on the track, otherwise distance will increase. ठीक है. Pathways which I can take is either this, like this, and this, है ना. I have these from A to B. Or I can take is this, then this and this. Or I can go from here, then here, like this. You know, these are the different ways I can reach. So total in how many different ways I can reach from A to B? Question clear है सबको? चलो जी, मिली जुली सरकार है. सब मिलके सॉल्व करेंगे. आपने सॉल्व कर दिया, देन बैच इज द विनर. ठीक है. कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है? जो ऊपर की है, सिंपल सा इजी सा कॉन्सेप्ट. ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. कैसे लगेगा? दैट इज द मेन पॉइंट. So anything pops out in your mind, share it with others. Together you can solve the question.
Okay, some answers are popping out. 5 raised to power 5. That's not the correct answer. Chalo, let me give you a hint here and see if you can decode it. I have to go east and I have to go north. Nope, nope. लॉजिक भी देना है ना, डोंट जस्ट गिव आउट द आंसर्स. आर्यन वर्मा लॉजिक दो बेटा. समय तो सही था कि उसमें वर्टिकल में 4 वेज है, हॉरिजॉन्टल में 5 वेज है. वर्टिकल में 4 वेज कैसे हैं? नॉर्थ जाना है, नॉर्थ जाना है, फिर नॉर्थ जाना है और फिर नॉर्थ जाना है वर्टिकल में. तो 4 वेज कहाँ होगा? ये तो मुझे एक ही दिख रहा है, नॉर्थ 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 नॉर्थ. सर बट जहाँ पे रुकना है वो भी है ना. हाँ, तो वो पॉइंट इज देयर. सो basically going from A to B, I have to take 4 steps northward and 5 steps eastward. Now it doesn't matter I take east first or north afterward. If I'll permute them, I make it as north, east, east, north, east, north, east, east, north. So I am getting one of the way to reach from A to B. That is, I go north, then east, east, then north, then east, north, east, east, and north. You know? So this is one of the way of reaching from point A to B. Now tell me what will be the answer. Hanji, what will be the answer? So I have to take 9 factorial upon 4 factorial 9 factorial upon 5 factorial into 4 factorial. You know? Any permutation of north, 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 north and east, 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 east will give me one solution for reaching from A to B. And total permutations are 9 factorial by 5 factorial, 4 factorial. हाँ जी, agreed? Yes. ठीक है? Okay. सर फिर से समझा दीजिए प्लीज. हाँ जी बेटा, आपका लॉग आउट हो गया था? यस सर. Okay. So basically if I have to reach from A to B, ठीक है? So I have to take total of 4 steps northward, 4 steps northward and 5 steps in east direction. Now it doesn't matter if I take east first and north afterward. So if I am taking this route way and then this and then this and this route way will mean that I am taking east, 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 then north, north, east, east, north, north. This is one of the permutations of these numbers. ठीक है? इन लेटर्स का ये एक पर्टिकुलर परम्यूटेशंस है. तो इस लेटर के टोटल परम्यूटेशंस कितने होंगे? देयर आर 9 आइटम्स, out of which 4 are of one kind, 5 are of one kind. So total base this can be permuted is 9 factorial by 4 factorial, 5 factorial, and thus this is my answer. Each permutation will give me a new root. वो एक नया root देगा and that will be the answer. Okay, thank you sir. A very small pause है ना. Anyone any doubt? बहुत जरूरी है डाउट इस लेवल पे क्लियर करना. यहाँ क्लियर नहीं करोगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, ऐसा करते हैं, इसी पे 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं सो दैट योर डाउट्स विल बिकम मोर क्लियर. One, two, three. In how many ways I can reach from point A to B if I have to pass through point C? You know, point C mein my friend is here. So I have to pass through point C. How many ways I can go from A to B?
Sir, can you repeat the question about In how that C many part? ways I can go from A to B via C? प्रांतिक सॉल्व नहीं करना है, फैक्टोरियल की फॉर्म में आंसर दें ना, सो आई कैन मेक आउट कि आपने क्या लॉजिक लगाया है. So from A to C, I have to take 3 north and 2 east steps. लियांका टोटल कितने वेज होंगे बेटा ये? Sir, 5 factorial. Sorry, sir. Upon 1 2 3 same type, 1 2 same type. 3 factorial. Sir, मुझसे बोला नहीं जा रहा. Sorry. Into 2 factorial है ना? So this is 5 4 3 2 1 upon 3 2 1 into 2 1. So this gets cancelled out. This is 2s, so that is 10 ways are there. ठीक है? So let's talk to Lianka again. C to B. How many north steps are there, beta? Sir, 4. North. Sorry, 2. And east? 4. ठीक है? So total ways. The word is factorial. हाँ जी. Sir, 6 factorial upon 2 factorial into 4 factorial. Very good. ठीक है? So factorial से factorial cancel out हो गया 4 factorial. ठीक है? This is 15 ways. ठीक है? Total add करेंगे या multiply करेंगे? Sir, add. You will multiply. आपने A से लेकर C तक कौन सा पाथ फॉलो किया है? That does not guide or decide कि आप C से B तक कौन सा पाथ लेंगे. Both are mutually exclusive. ठीक है? आपने C से B तक अगर सिर्फ ये पाथ लिया है बेटा, है ना, सिर्फ ये वाला पाथ लिया, ठीक है, तो यहां पर आप A to C जो है you could have taken 10 ways into 1 way, so that gives 10. उसके बाद you decided no, I'll take this path, then 10 ways with this, है ना, or you are deciding I'll take this path, 10 ways with that. So it is basically multiply, है ना. These are number of ways you are wearing a shirt, number of ways you are wearing a trouser. Both are independent. So total is 10 into 15, 150 ways. Okay, a sincere request. If things are not clear, please send me a message, chat box, or raise your hand. Okay. Question. One plus. In how many ways you can arrange this? Factorial की terms में. Speak it out. Arjun? Yes, sir. In how many ways you can arrange this? These are your 8 ones are there and 3 plus signs are there. So total how many items are there? So 11. 11 ways में 11 factorial ways you can arrange. But 8 are of one kind, 3 are of another kind. So total permutation is 11 factorial by 8 factorial, 3 factorial.
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन अरेंजिंग A, B, my answer will be total 5 items are there, 3 are of one kind, 2 are of another kind. So this answer is 5 into 4 into 3 factorial. मैं आपको शो कर रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन हो रही है. into 2, this gets cancelled, so this is 10. नेक्स्ट टाइम में आई विल बी राइटिंग इट डायरेक्टली. 3 फैक्टोरियल अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल करके आई राइट इट लाइक दिस. ठीक है. सो टोटल 10 वेज आर देयर. 10 वेज कौन से बनेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो दिस विल बी A, B, A, B, A, B, B, A, B, A, B, A, है ना. A, B, A, B, A, B, B, A. So like this, total 10 permutations will be there. मैंने 6 लिखी है, आगे आप लिख सकते हैं. टोटल 10 permutations will be there. अभी यहां तक क्लियर है क्वेश्चन. चलो वापस वहीं पर आ जाते हैं. ठीक है. ये क्वेश्चन जो है IIT में ग्रिड के नाम से आते हैं, सॉल्विंग द ग्रिड क्वेश्चंस. इसमें कुछ आपको जो है कहीं पर कोई आपको फॉर्मूलाज लिखवाएगा. प्लीज फॉर्मूलाज मत बाय हार्ट करें. पीएनसी में फॉर्मूलाज करने का मतलब है पीएनसी आपको क्लियर ही नहीं है. राइट. नाउ थिंग इज this road is not available. In how many ways you can go from A to B? Okay. Or let's make one thing. This intersection is not available. This thing is not available. ठीक है. आप यहाँ पर जो कर्फ्यू लगा हुआ है या जैम है, you cannot pass through it. In how many ways you can go from A to B? हाँ जी. Anyone how to proceed? सर हाँ जी. सर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पहले पूरा निकाल लें कि मतलब जितनी भी वेज है, और फिर जो इस इंटरसेक्शन के पाया जा रही है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इम्प्रेसिव है ना. बिल्कुल सिंपल है. अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको नॉर्थ में कितने स्टेप्स लेने हैं बेटा? 6 स्टेप्स. तो नॉर्थ 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 नॉर्थ. ठीक है. ईस्ट में आपको कितने स्टेप्स लेने हैं? 6 स्टेप्स. 6 6 6 6 6. टोटल कितने वेज हो गए बताओ फटाफट. 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल. माइनस कितना करेंगे? जो इस पाथवे से पास कर रहा है, दैट विल बी हाउ मच? पहले आप A to C फाइंड करें. A to C will be total 3 steps in north, 3 steps in east. 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल. आगे क्या करें? सर इतना ही आगे भी है. माइनस. हाँ जी, कौन बताएगा? सारांश ने क्या मिस्टेक की है? सर नहीं, पहले सर हम उसका भी निकालेंगे, फिर जो सर जैसे आपने वो पहले मल्टीप्लिकेशन से किया था वो वेज निकाल के फिर माइनस करेंगे. हाँ जी, दिस इज द आंसर. ठीक है. माइनस नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा. A to C to B एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट दिस. सबको क्लियर है? मैं अभी 1-2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ एंड कल जो है हमारे फिर किटकैट क्वेश्चंस भी होंगे इसमें ना. इजी क्वेश्चन बट ट्रिकी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ओहो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा. ठीक है. क्वेश्चन अब ये बहुत ध्यान से सुनना. A plus B plus C is equals to 10. Find how many
different solution are there if A, B, C are whole numbers. सोचो सोचो सोचो, पढ़ क्या रहे थे, चालू क्या कर दिया है ना सर, पीएनसी पढ़ा रहे थे, ये बीच में क्या इक्वेशन और नंबर्स आप लेके आ गए हैं। क्वेश्चन समझ में आया सबको? डिफरेंट सॉल्यूशंस क्या हो सकता है? वन ऑफ द सॉल्यूशन इज 0 + 9 + 1 और वन सॉल्यूशन इज 5 + 2 + 3, right? One solution is 10 + 0 + 0. All these are possible solutions. Agreed? क्वेश्चन है टोटल ऐसे कितने सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? So if I'm giving you a hint, है ना, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग आंसर बता पाएंगे। मैं इस 5 को लिख रहा हूं 1 1 1 1 1 प्लस इस 2 को मैं लिख रहा हूं 1 1 प्लस इस 3 को मैं लिख रहा हूं 1 1 1। चलो आंसर दो। Nope. Anyone who wants to share something? हाँ जी प्रांतिक। सर 1 सेकंड सर। Prantik, no, you missed the train by a margin. So you have basically, the question is same as you have got 10 ones are there, है ना, आपके पास 10 ones हैं, ठीक है, और साथ में आपके पास 2 प्लस आएंगे। इनको जब आप परम्यूट कर रहे हैं, every time you will get a new solution for this equation, ठीक है। इस पर्टिकुलर परम्यूटेशन में सॉल्यूशन क्या बना आपका, बताओ 10 + 0 + 0। अगर मैं यहां परम्यूट कर दूं, आई एम राइटिंग इट एज लाइक दिस, आपके पास सॉल्यूशन क्या आया, 2 + 6 + 2। If I am permuting it again, बताओ what will be solution? हाँ जी solution 9 + 0 + 1। 9 + 0 + 1। These all are different solutions where sum total is 10, है ना, and every time value of ABC is different। एक different permutation है, that means value of ABC will be different। And total how many permutations are there for this? इनकी total permutations कितनी होंगी? So for that how many total items are there? 12 items are there, out of which 10 are of one kind, 10 ones are there, and 2 are of one kind, that is 2 plus signs are there. So total how many solutions are there? So number of solutions is 12 factorial by 10 factorial 2 factorial, which is 12 into 11 by 2 factorial, which is 66.
ठीक है, डन डन डन। यस सर। चलो, परम्यूटेशन में ना बहुत जरूरी है रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सेम टू टॉपिक्स। फर्स्ट हम नंबर्स लेंगे जीरो को इंक्लूड करके, एंड देन विल टेक अगेन दिस परम्यूटेशन टॉपिक वेयर few items are of same kind. ठीक है, so 3-4 classes is on permutations, then 2-3 classes on combinations, and then there will be classes on PNC in geometry. Okay, ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, आपके 3 लेंदी चैप्टर है, एक PNC, एक ट्रिगो और एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बाकी चैप्टर्स हैं दे आर रिलेटिवली स्मॉल। Okay, let's end the session now. So wait, y is multiplied to 11. Rihanna, please come again. बेटा clear नहीं है। y is it multiplied by 11? Okay. आप यहाँ पर पूछ रहे हैं बेटा? हाँ वही। Okay, so this is 12 factorial upon 10 factorial into 2 factorial. 12 factorial is 12 into 11 into 10 up to 1 है ना, that is 10 factorial by 10 factorial into 2 factorial. So this gets cancelled out. 2 6 are 12, 6 into 11 is 66 है ना, ये dot is into. Still check if not clear. Don't leave any doubt है ना, I don't mind extending it by 15 minutes or half an hour, but doubts नहीं रखने हैं। Okay, very good then. We'll meet again on Thursday. Sunday की class will usually keep for 1.5 hour. चलो, thank you, bye bye. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Welcome. Thank you, sir. Bye bye बेटा। बाय सर। Thank you, sir. Welcome.